Hello and welcome. In this video, we will learn about the comparison testers of improper integrals. Why do we need comparison test? Direct evaluation of improper integrals is often difficult or impossible. Instead of computing the exact area, we compare it with another integral. What does that mean? कि अगर हमारे पास कोई भी ऐसा improper integral है और जो complicated है f of x, d of x, हम क्या करेंगे? हम एक चॉइस बनाएंगे या एक फंक्शन लेंगे g ऑफ एक्स ए बी g ऑफ एक्स। रिमेंबर, अगर f ऑफ x की सिंगुलर डिसकंटिन्यूटी a पर है तो g ऑफ x की भी डिसकंटिन्यूटी a पर होनी चाहिए, और f ऑफ x की डिसकंटिन्यूटी b पर है तो g ऑफ x की भी डिसकंटिन्यूटी b पर होनी चाहिए। और हम देखेंगे अगर g ऑफ x कन्वर्ज होगा तो f ऑफ x भी कन्वर्ज होगा in a different cases, in a two different cases. A very useful comparison integral, that is d of x minus a raised power n, and it converges when n is less than 1 and diverges if n is greater or equal to 1, और अगर लेस देन हो तो फिर इस तरह। और अगर देखा जाए यहाँ पर जो इंटीग्रल इम्प्रॉपर इंटीग्रल है इसकी सिंगुलरिटी कहाँ पर है, जो डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन कहाँ पर है, ए पर। ऐसा ही एक और इंटीग्रल है, और ए टू बी डी ऑफ एक्स एंड बी माइनस एक्स ओवर एन, और यहाँ पर बी पर है। सो हमेशा ये भी कन्वर्ज करेगा, ये भी कन्वर्ज करेगा इफ n is less than 1 and it diverges if n is greater or equal to 1। हम चेक करेंगे क्या d of x minus a रेज पावर n कन्वर्ज होता है क्या n लेस देन 1 पर, और डाइवर्ज होता है n ग्रेटर और इक्वल टू 1। तो अगर आपने पहली वीडियो देखी होगी तो हम क्या करते थे, इम्प्रॉपर इंटीग्रल को सॉल्व करने से पहले हम देखते थे सिंगुलरिटी कहाँ पर है। सो x माइनस ए, तो फिर दैट मीन्स a पर सिंगुलरिटी है, तो फिर क्या होगा a b d ऑफ x बाई x माइनस ए। सो हम क्या लिखेंगे, नाउ हम सिंपली इसे इंटीग्रेट करेंगे, फिर हम लिमिट्स देंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। नब अगर हमारे पास लिमिट t टेंड्स टू a, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दो केसेस बनेंगे। फर्स्ट, अगर माइनस n प्लस 1 इज लेस और इक्वल टू 0, what it will be, that will be from below side, this side it will be to the in denominator, and when t tends to a, that will be 0, so that becomes the infinity। और अगर minus n plus 1 is greater than 0, so what will be here, so this will be in the same place, so it will be 0 when t tends to a, it will be a minus a, that will, this term will be 0, and this will be like this, minus b a minus n plus 1 and divide by minus n plus 1. So in other words, we can write it like this. This will be n greater or equal to 1 or n less than 1. So that means it have a finite value, when n is less than 1, and it will be of infinite if n is greater or equal to 1. Once again, so that means this is convergent if n is less than 1, or it diverges when n is greater or equal to 1. But if we have a function that have a singularity at b, so we can write a b d of x minus b minus x raised power n. So it has a singularity at b, and the same process we can check
that n is less than 1, it converges. Now we move to the comparison test first, direct comparison test. Let f and g be positive functions on a closed interval ab such that f of x is less or equal to g of x. So rule number first है, if g of x, if bigger side converges, then we say f of x converges, and agar if f of x diverges, if smaller side diverges, we say g of x also diverges. But converge does not hold. That means कि अगर f of x converge होता है तो we can't say g of x converges, और अगर हमारे पास g of x diverge होता है तो we can't say f of x diverges. So let us move to an example. अब अगर हमारे पास फंक्शन इस तरह हो गई 0 1, so let f of x, which will be 1 by under root of 1 minus x cube, so इसकी सिंगुलरिटी, इसकी डिसकंटिन्यूटी कहाँ पर होगी, x इक्वल टू 1 पर. सो x इक्वल टू 1 पर सिंगल डिसकंटिन्यूटी है. हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं 1 बाय, हम यहाँ पर इस तरह भी लिख सकते हैं 1 बाय 1 माइनस एक्स 1 बाय 2 एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 बाय 2, सिंपली बाय 1 क्यू ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फार्मूला से. सो x इक्वल टू 1 is the only discontinuity of f of x. Since 1 by 1 plus x square 1 over 2 is a bounded function, so if it is bounded, that means there is an upper bound, so we can write it like this: x plus x square for some positive bound, that is m, say m. Now f of x will be less or equal to, this will be less or equal to m, and that will be 1 minus x 1 over 2. And let us suppose we say this is g of x, say. So g of x have same discontinuity at x equal to 1, okay, and f of x is less or equal to g of x. और g of x कौन है इस टाइम, g of x है, अगर मैं इसे प्रॉपरली लिखूं तो g of x will be like this: g of x, that is 0 and 1, 1 by 1 minus x 1 by 2 d of x. और हमने अभी देखा कि एक प्रॉपर इंटीग्रल में when n is less than 1, what we can say, that is n is less than 1, we can say that this integral converges. So 1 by 2 is also less than 1, what we can say, g of x converges. And by comparison test, first by comparison, direct comparison test DCT, we can say f of x converges. Let us move to the another test. Comparison test second. Limit comparison test, in short LCT. Let f
and g be a positive function such that limit x tends to a f of x by g of x goes to the limit L, and which is finite, neither 0 nor infinite, then integral f of x and the g of x converge or diverge together. Now edge cases of a LCT comparison test. If f of x by g of x it goes to the 0, if it is 0 and g of x converges, then we can say f of x also converges, and if it goes to the infinity, then and g diverges and the integral g of x diverges, then we can say f of x of a to b integral f is also divergent. Now an important note, हमने देखा फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट में और सेकंड कंपैरिजन टेस्ट में f of x and g of x both are positive, but if they are negative, so what we do, we say instead if we have f as negative function in a closed interval, then we replace f by minus f. Simple. Now we move to the some examples. If we have an integral 1 to 2 under root of x divided over log of x d of x. So first what we do, let f of x will be equal to under root of x and log of x. So at x equal to 1 it have singularity, at it have discontinuity, because log 1 will be 0, so it will be undefined, so we can say is the only discontinuity of f of x in 1 and 2. So by limit test हम क्या करेंगे, let us choose g of x. g of x जब हम चूज करेंगे तो पहली कंडीशन हमें क्या याद रखनी है कि उसकी भी सिंगुलरिटी वही होनी चाहिए, उसकी भी डिसकंटिन्यूटी वही होनी चाहिए जो f of x की है. सो f of x की क्या सिंगुलरिटी है, 1. So what will be here, x minus 1, because it's a lower bound, so we can write x minus 1. Now limit x tends to 1 f of x by g of x. So what will be that, limit x tends to 1 f of x, that will be under root of x, and here will be log of x into x minus 1. डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आ गया. अगर हम 1 देंगे तो it will be 0 by 0 form. So what we do, we use L'Hospital's rule. So limit x tends to 1, it will be 3 by 2 x 1 by 2, and here will be minus 1 by 2 x minus 1 by 2, and here will be 1 by x. When x tends to 1 it will be 1. So by comparison test यहाँ पर लिमिट फाइनाइट आ गया, ना तो 0 आ गया ना तो इन्फिनाइट आ गया, तो हम क्या कह सकते हैं, बाय LCT limit comparison test we can say f of x and g of x converge or diverge together. Now we have, as we have g of x, since g of x 1 and 2, g of x is divergent because here is the power 1 and we know n is less than 1, then it becomes convergent. But when n is greater or equal to 1, then we can say it is divergent. So this is divergent, diverges. So by comparison test we can say f also diverges. So we can say here diverges.
सेकंड एग्जांपल अगर इस तरह है 0 to π/2 sin x by x p d of x, हमें ये देखना है फॉर p की किस वैल्यू पर ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्ज होगा या नहीं। सो हम क्या करेंगे, पहला लेट f of x इज इक्वल टू साइन x by x raised power p। So we can write it like this, 1 by x raised power p minus 1 and sin x by x. It have a singularity at 0. Simply it have a discontinuity at 0. We can say x equal to 0 is the only discontinuity of. Now we choose a g of x. g of x में क्या कंडीशन है कि g of x के लिए भी वही discontinuity होनी चाहिए। So we can choose g of x like this. g of x will be 1 by x p minus 1. फिर से देखना कि x जब 0 होगा तो फिर तभी उसी टाइम इसकी भी discontinuity होगी। Now limit x tends to 0. So f of x by g of x, which is equal to limit x tends to 0, that will be 1 by x p minus 1 sin x by x into x p minus, that is p minus 1. This and this cancel out and limit x tends to 0 sin x by x, that will be 0. So by LCT we can say when g of x converges, f of x converges, when g of x diverges, f of x diverges. But here g of x converges if p minus 1 is less than 1, and it diverges, we can say it is converges, and it diverges when p minus 1 is greater or equal to 1. Or we can write it like this, p is less than 2 or p is greater or equal to 2. So by LCT we can say that f of x integral 0 and π/2 sin x xp d of x converges if p is less than 2 and it diverges if p is greater or equal to 2. सो इन एंड हमने क्या सीखा आज, डायरेक्ट कंपैरिजन और लिमिट कंपैरिजन, और हमेशा याद रखना 1 by x minus a रेज पावर n, हमेशा याद रखना कि ये कब कन्वर्ज होगा और कब डाइवर्ज होगा। अगर आप और एग्जांपल्स देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।